ଆମେ ଏଟା ପଢିବା Java application programming or Java API. Java API is a software component that provide capabilities such as GUI application. माने हमर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एप्लीकेशन बनेया पय मैं यूज करू जे कोन Java API माने ये API टा यूज करू Java API is a collection of software components that provide capabilities such as GUI application, graphical user interface design करिया पय मोर जहाँ भी टूल्स और कंपोनेंट दरकार एटा Java API मते प्रोवाइड करे the related class and interface of the Java API group with the packages तो ए जो ग्राफिक यूजर इंटरफेस डिजाइन करिया पय जहाँ भी टूल्स और कंपोनेंट दरकार ए API थ्रू रे हमें डिजाइन करि देबा API रो फुल फॉर्म होची एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस ए इंटरफेस थ्रू रे हमें प्रोग्राम टा को लिखि परिबा बिल्ड अप करि परिबा तापरे ताको हमें रेडी करि परिबा कस्टमर लोकेशन इंस्टॉल करबो so it is having full component like you can develop you can deploy you can design and you can testing your application so that is for the API so next is what some architecture security so Java is such a language so if you install the software in any device then no kind of virus will attack okay तो देखिए हमारा जो मोबाइल फोन है एंड्रॉइड OS हम यूज करते एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम में बैकएंड होती लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम तो एक्चुअली कहबा हमें जो मोबाइल यूज करते तार बैकएंड रे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम अछि इट इज नॉट एंड्रॉइड ओके पर as a user हमें कहते इट इज एंड्रॉइड डिवाइस बट एज अ टेक्निकल हमें जो देखिबा तार बैकएंड रे हम रहबो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज कंप्लीटली रिटन इन जावा तो जावा ऑपरेटिंग सिस्टम जावा लैंग्वेज रे जो भी सॉफ्टवेयर हमरा बना हुए तापे हमको कोनोसी एंटीवायरस दरकार हुए नहीं because Java programming acting as a antivirus for it Windows हमें जो लैपटॉप यूज करते तदा माइक्रोसॉफ्ट हमरा यूज करा होची माइक्रोसॉफ्ट रा हमें एप्लीकेशन बनोचे माइक्रोसॉफ्ट रा जेंति कि होची विंडोज 10 यूज करछे विंडोज 11 यूज करछे ओडा होची माइक्रोसॉफ्ट रा फीचर तो माइक्रोसॉफ्ट रा जो फीचर ओडा करा होची तादरे सिक्योरिटी रहिता सेति पे हमें कोन करू तादरे एंटीवायरस इंस्टॉल करू किंतु जावा ऑपरेटिंग सिस्टम हो किबा जो एंड्रॉइड मोबाइल फोन हो ता भीतर हमको एंटीवायरस यूज करा जाय तो जेते एंटीवायरस हमें आजकल मार्केट रे यूज करछे सो दैट इज ऑल रिटन इन द जावा सो इट इज so much highly secure so that यदि ताको ही हमें डायरेक्ट यूज कर दवा तले हमको कोन से एंटीवायरस ही दरकार पड़िबो तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को हमें सर्वर हिसाब रे बगर दो जो बड़ा बड़ा कंपनी गूगल सर्वर तो ये सब बैकएंड रे मतलब लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते तो व्हिच इज वेरी सिक्योर मींस अनऑथराइज्ड एक्सेस से हे करियो नहीं तो ये जो सिक्योरिटी फीचर ये प्रोवाइड करूची देयर इज अ फोर टाइप ऑफ सिक्योरिटी फीचर इट प्रोवाइड वन इज कंपाइलर लेवल सिक्योरिटी बाइट कोड वेरिफायर class loader and sandbox model so four type of security feature the Java has one is compiler level security bytecode verifier class loader and sandbox model এটা লিখে নিও security feature চারটা পয়েন্ট লেখা আছে compiler level security Java prevent error Java prevent error that arise due to the improper memory uses, reducing the compile time error. Typecasting in Java ensure that there is no data loss in the result or the Java code. Okay, so एक point हमरो कौन कहूचे, हमरो बुझौचे.
Okay, so let's see. मुझे तले वेरिएबल डिफाइन करीबी धर मु तीनटा वेरिएबल डिफाइन करूचे int a b and result ए तीनटा वेरिएबल मु डिफाइन कले मु सपोज a रे ने भी 10 b रे ने भी 2 तो result is equals to a by b जदि लिखिबी तो 10 by 2 it gives me result 5 सब जगह इंटीजर मु डिफाइन करछि तो नाउ मु एबे कोन करिवि a is equals to 10 ने भी b is equals to 3 ने भी the result equals to 10 by 3 so I expect that it is giving you 3.33 तो ए वैल्यू मते शो करिवो किंतु जेहेतु मु एटा इंटीजर डिफाइन करिछि ताले मोर ए जो पॉइंट बा फ्रैक्शन वैल्यू अछि एटा शो करिवो नि डायरेक्टली से मते रिजल्ट इक्वल्स टू 3 एटा शो करिवो ता अर्थ होछि कोन ना आमे जेहेतु इंटीजर डिफाइन करूचे ताहले ए जो रन टाइम रो जो वैल्यू 3.33 टा एटा मोर लॉस हे गला तेन मु एठी कोन करिवि जावा गोटे फीचर अप्लाई करूची सेटा कुहा जाय टाइप कास्टिंग तो टाइप कास्टिंग रे कोन करा जीवो ना मु गोटे डाटा टाइप रो आ गोटे डाटा टाइप टा को कन्वर्ट करि परिबि माने एटा इंटीजर रे अछि ए इंटीजर वैल्यू टा को मु स्ट्रिंग रे कन्वर्ट कर देबी तो ऑटोमेटिक एटा टाइप कास्टिंग हे जीवो तो जावा कन्वर्ट one data type to the another data type at runtime by using of casting feature बुझी पाइलो प्रज्ञा आज्ञा सर so next is a bytecode verifier it ensures that the bytecode doesn't violate access restriction such as read and write operation and verify that the bytecode doesn't forge pointer तो C प्रोग्रामिंग रे मेमोरी allocation deallocation पई हमें गोटे कांसेप्ट यूज करथले पॉइंटर तो पॉइंटर रा काम होची कोन ना से पॉइंटिंग करिवो को गोटे एड्रेस गोटे वेरिएबल एड्रेस टा को से पॉइंटिंग करिवो तो एठी हमर पॉइंटर कांसेप्ट नहीं जो मेमोरी allocation and deallocation is happen in the java directly तो एठी कोनोसी से बळे कांसेप्ट मु यूज करिवेनी जहा दे कि मोर पॉइंटर कांसेप्ट रहिबो सो एठी कोन हुए द बाइट कोड ता दुईटा वे रे वेरीफाई हुए इन फर्स्ट फेज द वेरीफायर चेक्स फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ द डॉट क्लास फाइल मु जते बळे प्रोग्राम ता लिखिबे से तार स्ट्रक्चर टा चेंज करिवो अकॉर्डिंग टू द जेवीएम स्पेसिफिकेशन मोर प्रोग्राम टा करेक्ट अछि कि नहीं जेवीएम टा को कहा जीवो इंजन ऑफ जावा तले से चेक करिवो जे जो रूल्स एंड रेगुलेशन मु डिफाइन करिछि जावा रे से रूल एंड रेगुलेशन वाइज मोर प्रोग्राम टा तयारी हेछि कि नहीं सेटा चेक करिवो इन द स्ट्रक्चर ऑफ डॉट क्लास फाइल रे तापर कोन हबो सेकंड लेवल फेज रे कोन हबो बाइट कोड इज रन द बाइट कोड वेरीफायर चेक्स द वैलिडिटी ऑफ द क्लास जो क्लास गुडा को मु डिफाइन करिछि सेटा कोठी यूज हेई परिवो कोठी वेरिएबल यूज हेई परिवो कोठी मेथड यूज हेई परिवो को जगह रे हमें देखो यूज करि परिबा कोन कोन रेस्ट्रिक्शन रहिबो कोठी हमें यूज करि परिबा नाही से सब एक्सेसिबिलिटी हमरा डिफाइन करा हबो सेकंड लेवल फेज रे फर्स्ट लेवल फेज रे से चेक करिवो मोर स्ट्रक्चर ता ठीक अछि कि नहीं जोटा कि डॉट क्लास फाइल रे रहिबो तापर सेकंड लेवल फेज रे से चेक करिवो मु जो वेरिएबल फंक्शन डिफाइन करिछि सेटा करेक्ट देखाइबो कि नहीं तो हमें देखिबा गोटे प्रोग्राम टा को रन कले केमती आसीबो जावा प्रोग्राम रे तो आगु हमें जानि छे जे जत्ते बेले हमें कोनोसी कंप्यूटर लैंग्वेज से कोनोसी लैंग्वेज से बुझे नहीं कंप्यूटर कोनोसी लैंग्वेज बुझे नहीं से केवल 0 and 1 फॉर्मेट टा को ही बुझी थाए तो 0 and 1 फॉर्मेट व्हिच इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज द बाइनरी कोड तो कंप्यूटर को हमें जहां भी इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करिवा से ताको 0 and 1 फॉर्मेट रे कन्वर्ट करिवो ओके ताको 0 and 1 फॉर्मेट रे कन्वर्ट करिवो एंड आमे जते प्रोग्राम टा लिखुचे जावा रे जते लिखुचे ताको आमे एक्सटेंशन ने सेव करूचे डॉट जावा फाइल आमे ताको स्टोर करूचे तापर आमे कोन करिवा ना गोटे कंपाइलर यूज करिवा कंपाइलर रे से कोन करिवो डॉट क्लास फाइल ले क्रिएट करियो तो जते तुमे जावा फाइल टा को रन करिवो देखिवो डॉट जावा तमे लिखुचो
जेता कंपाइलेशन करि सारिबो ऑटोमेटिक एई फाइलटा क्रिएट हे जिवो ये कोन करिवो एई कोड रो 0 एंड 1 फॉर्मेट बा बाइट कोड आको रखिवो बाइट कोड इज नथिंग बट इट इज अ मशीन कोड आमे कहि परिबा तो एई जो जेता बेले फास्ट लेवल फेज रे कोन हबो से चेक करिवो हमर बाइट कोड रो स्ट्रक्चर ठीक अछि कि नै माने अकॉर्डिंग टू द जेवीएम प्रत्येक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रो कोन थाए गोटे रूल थाए ग्रामर थाए तो प्रत्येक लैंग्वेज रो ग्रामर थाए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रो सेमति ग्रामर रहिछि तो एठी जो फास्ट लेवल फेज रे से चेक करिवो मोर ग्रामर वाइज मोर प्रोग्राम टा करेक्ट अछि कि नै जदि मोर ग्रामर वाइज प्रोग्राम टा करेक्ट अछि ताले से मते कोन करिवो ना मते नेक्स्ट आउटपुट एठी शो करिवो तो एटा फास्ट लेवल फेज रे हुए सेकंड लेवल फेज रे कोन हुए ना आमे जो वेरिएबल डिफाइन करिवा जंते सी प्रोग्रामिंग रे हमें वेरिएबल डिफाइन करथले जो वेरिएबल हमें सब डिफाइन करिवा से वेरिएबल टा हमें कोठी यूज करि परिवा सी प्रोग्रामिंग रे हमें फंक्शन डिफाइन करथले जो फंक्शन हमें डिफाइन करूचे से फंक्शन टा हमें कोठी यूज करि परिवा को जगह रे यूज करि परिवा को जगह रे हमें यूज करि परिवा नाही तो सेही सब स्ट्रक्चर हमर डिफाइन हबो कोठी ना सेकंड लेवल फेज सो दीटा लेवल फेज रे हमर प्रोग्राम रो स्ट्रक्चर टा चेक हबो ओके तो एबे देखियो नेक्स्ट फीचर कोन आउट होची क्लास लोडर तो क्लास लोडर डिटरमाइन हाउ एंड व्हेन applet will use the classes in running java environment in a java environment there can be many class loader and each class loader can create its own runtime environment the class loader load all the alpha applet and their reference तो class loader एबे देखिबा कोन तो देखिबा एबे आमे जेतले सी प्रोग्राम करथले सेठी कोन रहउची आ एठी कोन रासिबो क्लास लोडर रे तो देखियो हमें सी प्रोग्रामिंग रे गोटे कांसेप्ट यूज करथले गोटे हेडर फाइल हमें यूज करथले से हेडर फाइल ला कोन होतला ना stdio.h तो मो डिफाइन करथले stdio.h so when I write stdio.h so automatically मो पाखरे कोन हबो ना printf and scanf एटा मोर लोड हे गला printf and scanf एटा लोड हे जिवो बट माय टैक्स इज व्हाट तो मोर केवल गोटे टैक्स अछि कोन मते केवल डिस्प्ले करिवार अछि मते एठी ए दिटा जिंस मते दरकार नै मते केवल डिस्प्ले करिवार अछि तो जेतर मते डिस्प्ले करिवार अछि त स्कैनएफ माने एई जिंस रे किछि वर्क नै तो एटा मोर कोन हबो ना ऑटोमेटिकली लोड हे जिवो प्रोग्राम रे तेनो सेही हिसाब रे मु जेतर जावा रे गोटे प्रोग्राम रखिबे से एई स्कैनएफ बा एक्स्ट्रा फंक्शन लोड करिवो नाही जदि मु गोटे प्रोग्राम लिखिबी डिस्प्ले टेक्स्ट हेलो वर्ल्ड ओके डिस्प्ले गोटे सेंटेंस बा गोटे लाइन मो स्क्रीन रे डिस्प्ले करबा को चाहूची जदि सी प्रोग्रामिंग रे मु स्टोर करूची से फाइल साइज जदि 5 केबी हैला जावा रे सेंती प्रोग्राम लिखिबी सेही प्रोग्राम ताको सेव कली 5 केबी हैला आफ्टर कंपाइलेशन कोन हबो एटा हे जीवो 10 केबी किंतु जावा रे सेटा कम रहइबो एटा हबो 7 केबी it means java is not loading the unnecessary disturb so java is not loading the unnecessary functionality or unnecessary function which is not required for you it is only loading the particular classes which is required for your program so that the execution time in the java is very fast than the other programming language and it is more secure because it is not allowed to the other functionality to here so when there is a requirement you only loaded the particular class mate unnecessary jinso load karibar nai mor program ta ko heavy weight karibar nai tenu kon hoye sethi pai kon hoye na java program hoche emti gote program एटा सबुठरो स्मॉलेस्ट डिवाइस रे भी इंस्टॉल हे परियो इट कैन बी इंस्टॉल इन योर रिमोट कंट्रोल इट कैन बी इंस्टॉल इन योर डिजिटल वॉच so everywhere java programming is working so that 108 technology is embedded with the java so in the world 108 technology is embedded with the java so if you learn the java then you are capable to learn about the 108 technology so it is directly or indirectly it is integrated with the java okay because of these are the functionalities present it is helping you only loaded the particular classes or particular functionality which is
required for you. It is not loaded the unnecessary classes here. Got it? बुझियला प्रज्ञा? प्रज्ञा बुझियला? हेलो हाँ प्रज्ञा बुझियला कॉन्सेप्ट क्लास लोडर अच्छा एबे हमें पढ़िबा सैंडबॉक्स मॉडल Sandbox model is implemented in the Java applet container such as web browser. The sandbox model determines the limitation of the Java applet that they can only access the resources of the host computer, cannot access the files on the local computer. तो आगुरु कोन होतला ना जेते बेले क्लाइंट एंड सर्वर आर्किटेक्चर आमे होचे कोन क्लाइंट आमे रिक्वेस्ट पठाउचे धरा फेसबुक को पठाउचे जीमेल को पठाउचे से हमको रेस्पॉन्स दोउचे तो आगुरु थिला वन वे ट्रांजैक्शन मींस ओनली वी कैन कम्युनिकेट विद द वन सर्वर ओके सो वन क्लाइंट कैनॉट कनेक्ट विद अनदर क्लाइंट माने मु फेसबुक से तो कनेक्टेड करि परिबे किंतु फेसबुक रे जदि आउ किछि यूजर थान ताको मु चैटिंग करि परिबे तो एटा हेई परिबो तो सैंडबॉक्स मॉडल कौन करे ना एटा टू वे ट्रांजैक्शन से क्रिएट करे जा थ्रू कौन हम आम सर्वर सहित कनेक्टेड हो पारिबा एज वेल एज द आम क्लाइंट सहित कनेक्टेड हो पारिबा सो आई शो यू इन द फिगर तुम बुझी हबो आम ये देखा ये गोटे सर्वर रहा गोटे क्लाइंट रहा क्लाइंट कैन कम्युनिकेट विथ द सर्वर गोटे क्लाइंट सर्वर सहित कनेक्टेड माने कम्युनिकेशन करि परिबो सेमति एटा होचे क्लाइंट 1 सेमति एटे क्लाइंट 2 रहिला ये भी सर्वर सहित कनेक्टेड हो पारिबो सो दीटा क्लाइंट गोटे सर्वर सहित हमर कनेक्टेड हो पारिबो बा से माने सर्वर रो एक्सेस इंफॉर्मेशन एक्सेस करि परिबे तो ए क्षेत्र रे आमे जदि गोटे क्लाइंट आ गोटे क्लाइंट सहित कनेक्टेड होबा को चाहूची ताले से कनेक्टेड हो पारिबो नै एटा गोटे एरर शो करिवो बाय एक्सेप्शन शो करिवो सो इट्स सेइंग दैट one client cannot connect with the another client तो सैंडबॉक्स मॉडल डिटरमाइन दिस लिमिटेशन से कोन करिवो ना सर्वर पाई गोटे पाथ क्रिएट करिवो तो तू ए पाथ रे कनेक्टेड कर आउ ये ए पाथ रे माने समस्त पाई दीदीटा वे करिवो गोटे वे रे से माने सर्वर सहित कनेक्टेड हो परिबे आ गोटे वे रे से क्लाइंट सहित कनेक्टेड हो परिबे सो इजीली वन क्लाइंट कैन कनेक्ट विद द अनदर क्लाइंट एंड one client connected to the another server so that if client and server are present in a network every person can sharing the information माने समस्त समस्तक पाखरे इनफॉरमेशन ता शेयर करि परिबे क्लाइंट सर्वर पाखो पठै परिबो गोटे क्लाइंट आ गोटे क्लाइंट को पठै परिबो सो इट इज ए व्हाट ऑल आर कनेक्टेड टू ए नेटवर्क सो दैट एवरी इनफॉरमेशन इज पास्ड इन ए साइक्लिक मैनर बुझियला प्रज्ञा आज्ञा सर ओके सो आमे एबे टिके प्रोग्राम भीतर को जीवा एटा थला जावा रो फीचर सब रहितला त प्रोग्रामेटिकली आमे टिके भीतर को जीवा एबे so these are all the security and feature of Java now another part is what garbage collection is a process that is used to the free the memory of the object that are no longer in use when a program stops referencing an object it is not required anymore and can be deleted it means what ame jete bele घरे कोन करू ना परिवा काटो परिवार चोपा वाला तक नहीं डस्टबिन ने पकाओ किसी जरी वाला डस्टबिन ने पकाओ सो दैट मींस इट इज ए गार्बेज माने आमे कोन करू ना डस्टबिन ने रखो सकाळे ताको आमे कोन करू डिस्पोज करू सो गार्बेज कलेक्शन इज इन द प्रोग्रामिंग आल्सो लाइक दैट प्रोग्राम रे कोन हुए आमे जते भी सॉफ्टवेयर में यूज करिवा
सेतबे हमको देखाई जेतले मोबाइल रे हमें कोनोसी वर्क करूचे सेतबे मेमोरी फ्रेड करिया पे देखिबो केते देखिबो जेतले कोनोसी फाइल उडा का ओपन होउची तादरे सब जंक फाइल क्रिएट हो जाए से माने मेमोरी नहीं जानती मेमोरी डीअलोकेट करंती किंतु से मेमोरीटा कंप्लीटली डीअलोकेट हेई न थाए तो सेटा को जो जंक फाइल तो जंक फाइल को हमको रिमूव करिया पड़िबो तो गार्बेज कलेक्शन थ्रू रे कहबो आमे धर प्रोग्राम टा बनेवा से प्रोग्राम कोन करिवो गोटे मेमोरी अलोकेट करिवो जदरे हमें वैल्यू स्टोर करिवा सो आफ्टर गेटिंग योर रिजल्ट जेंते कि मु कोन कहली बिस्कुट खाइली तो बिस्कुट रो जरी रही गला तो जरीटा मो पे आ कोनोसी यूटिलाइजेशन हबनी सो आई थ्रो इट मुझे थ्रो कर देबी तो एटा कोडी थ्रो करबी ना डस्टबिन रे थ्रो करबी जेमती जावा रे गोटे फीचर अछि दैट इज कॉल्ड द गार्बेज कलेक्शन फीचर तो ए फीचर थ्रू रे कह हबो मोर जहां भी मेमोरी अलोकेट करूची से मेमोरी मते जदी दरकार नहीं बा से मेमोरीटा मोर आउ काम रे लागुनी सो आई हैव टू फ्रेड दैट मेमोरी सो मेमोरीटा को मु फ्रेड कर देबी बा से मेमोरीटा को खाली कर देबी ताले कह हबो से जगह रे आ गोटे लोक रही परियो बा से लोकेशन रे आ गोटे वैल्यू हमर रही परियो सो गार्बेज कलेक्शन इज द प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू फ्री द मेमोरी ऑफ द ऑब्जेक्ट कोनोसी मेमोरी टा को फ्री करिया पे हमें गार्बेज कलेक्शन यूज कले when the program stops referencing an object and it is not required anymore माने कोनोसी प्रोग्राम रे हमें गोटे ऑब्जेक्ट को रेफरेंस दउचे आ सेटा हमको आ दरकार ही पडु नै सेही मेमोरी टा को हमें खाली करिया पे हमें यूज करछे गार्बेज कलेक्शन the space that is used by the object is released for use by the another object garbage collection feature implies that se kon कहउची it is implies that new objects are created नुआ ऑब्जेक्ट को से क्रिएशन पे अपॉर्चुनिटी दबो एंड जो ओल्डर ऑब्जेक्ट अछि बा जोटा के हमर दरकार नै सो दैट इज डीअलोकेट द मेमोरी डीअलोकेट फ्रॉम द मेमोरी तो मोर एटा दरकार नै मु ताको डीअलोकेट करबी सो दैट इज कॉल्ड द गार्बेज कलेक्शन प्रोसेस ए जो गार्बेज कलेक्शन हमें इंप्लीमेंट करिया पे प्रोग्राम रे हमें तीनटा फीचर यूज करछे गोटे होची रेफरेंस काउंटिंग कलेक्टर गोटे होची ट्रेसिंग कलेक्टर आउट होची कॉम्पैक्टिंग कलेक्टर सो इन द थ्री वे वी इंप्लीमेंट द गार्बेज कलेक्शन reference counting collector tracing collector and compacting collector तो एबे हमें पढ़िबा डेटा टाइप तो आगुरु हमें पढ़ितले वेरिएबल इज ए वर्ड इट इज ए मेमोरी लोकेशन वेयर वी स्टोर द वैल्यू जेमति कि हमें सिनेमा देखा को जिबा सिनेमा हॉल ले बसिया पे हमक पे गोटे सीट टा अवेलेबल अछि तो से सीट टा मते पर्टिकुलर टाइम पे अवेलेबल अछि जेते बळे मोर शो टा सरी जाउची तले से सीट रे आउ जने लोक आसी मु 3 to 5 गली मूवी देखिया पे मोर 5 रे ओवर हे गला जदी 5 रे मु जबरदस्ती बसी मते आसे सिक्योरिटी नहीं फोकड़ दो तो सेही जगह रे कह हबम मैं दैट सीट आई बुक फॉर द पर्टिकुलर टाइमिंग तो once it is over that seat is allocated to the other person तो दैट इज कॉल्ड द वेरिएबल तो सिमिलर वे प्रोग्राम रे कोन करिए ना हमें गोटे मेमोरी डिफाइन करू से मेमोरी रे हमें वैल्यू स्टोर करू तो once मु जेते बेले रिजल्ट पाई जाउची से मेमोरी मते आ दरकार पड़े नै सो आई हैव टू रिमूव दैट मेमोरी फ्रॉम माय प्रोग्राम So Java is a strictly typed language, which means that the Java gives importance to the type checking. Our अर्थ होची आमे जते बेले डाटा टाइप टा कोन दरकार पड़े जेमति के पानी बोतल आमे नवा पानी बोतल ले जदी मु कहिबी बही पसेबी so it can possible and if I want to take the water in my study bag it is not possible तो समस्त माने that is also a container water bottle is a container your school college bag and school bag is a container but in that container it cannot store all the type of values or all the type of things so for everything so we require the special type of container like for the liquid item we require a bottle for the solid item that the thing is different so similar way हमें जेतबे कंटेनर टा डिफाइन करूचे से कंटेनर रे हमें को टाइप रो वैल्यू रखिबा सेटा डिसाइड करिबा कोटा ना डेटा टाइप तो डेटा स्टोर इन द मेमोरी कैन बी ऑफ मेनी टाइप so Java is a strictly typed language which means that Java gives importance to the type checking so there are three category of data types are present one is primitive data type a reference data type another is abstract data type so three category of data type is present primitive data type, reference data type, and abstract data type. So first of all, primitive data type is what? Primitive data type is a data type which is called as the built-in data type in the Java is called as the primitive data type. Built-in means which is already defined, which is predefined, or which is already defined by the Java is called as the primitive data type. Means जोटा कि जे भी हम define करी आगरो सेटा को जो primitive data type. ए जो प्रिमिटिव डाटा टाइप अछि हमरा चारि प्रकार प्रिमिटिव डाटा अछि गोटे होछि इंटीजर टाइप जोटा केवल न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करिवो
गोटे होची फ्लोटिंग टाइप से कौन करिवो खाली फ्रैक्शनल और डेसिमल नंबर स्टोर करिवो आ गोटे हला बुलियन टाइप रे कौन हुए ना एस एंड नो क्वेश्चन रहिवो ट्रू एंड फॉल्स एस एंड नो रहिवो बुलियन टाइप रे कैरेक्टर टाइप रे कौन हबो ना खाली नंबर्स लेटर्स एटा स्टोर हबो दैट इज अ कैरेक्टर टाइप so three category of data type we are using integer type floating point type boolean type or another is character type so now this four category of data type again it is grouped into the eight part ए जो फोर कैटेगरी रहिला सेरा एट डाटा टाइप हमर आसिला जेतबे देखिबो फॉर इंटीजर पई कोन रहिला ना बाइट रहिला शॉर्ट रहिला आईएनटी रहिला लॉन्ग इंटीजर रो डाटा टाइप एटा हला ग्रुप इंटीजर हला गोटे ग्रुप इंटीजर ग्रुप अंडर कोन रहिबो बाइट रहिबो शॉर्ट रहिबो आईएनटी रहिबो लॉन्ग रहिबो तार साइज सब देला बाइट रहला 1 बाइट शॉर्ट रहला 2 बाइट आईएनटी रहला 4 बाइट लॉन्ग रहला 8 बाइट default value for all integer is 0 default value for all integer means जदि integer रे मो कोनोसी value store न करूची ताहले 0 0 है कि इनिशियलाइजेशन हबो फ्लोटिंग पॉइंट फ्लोट टाइप रे कोन रहिबो ना फ्लोट एंड डबल रहिबो फ्लोट रो साइज होची 4 बाइट एंड डबल होची 8 बाइट डिफॉल्ट वैल्यू फॉर ऑल फ्लोटिंग पॉइंट इज 0.0 एंड 0.0 जेहेतु एटा डेसिमल नंबर तनो 0.0 0.0 रे एठी रहिला सेमिति बुलियन रे कोन रहिबो बुलियन रे रहिबो ट्रू और फॉल्स वैल्यू डिफॉल्ट वैल्यू होची फॉल्स माने जदी कोनोसी वैल्यू मु सेठी इनिशियलाइजेशन न करूची ताले फॉल्स सेठी इनिशियलाइजेशन हबो कैरेक्टर साइज हला 2 बाइट डिफॉल्ट वैल्यू हला null माने डिफॉल्ट वैल्यू हला जेमति कि हमें कोनोसी वैल्यू न रखुचे सेरा null इनिशियलाइजेशन करिवो तो एटा हला हमर कोन ना डाटा टाइप तार ग्रुप तो नेक्स्ट हमें पढ़िवा रेफरेंस डाटा टाइप कोन ना इट कंटेन द रेफरेंस और एड्रेस ऑफ द डायनामिकली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट माने सी कोन करे निज पाखरे कोनोसी वैल्यू रखने सी कोन करे जनकर एड्रेस रखे कोडी वैल्यू अछि ओके सो मु जेंति मोर एड्रेस रखिबी मो संगर एड्रेस रखिबी सपोज मो संग पाखो के जीवा को चाहू से मते पचारिबो सपोज आई नो योर एड्रेस सो एनीबॉडी वांट टू go to you so they taking the reference for me मु कहबे भग्या ये तो मु देखिया को चाहू छथि no I am giving a reference data type doesn't have the value of its own it contain the reference where your value is stored तो এই जो reference data type जो अछि हमर दुईटा reference type अछि गोटे होची object आ गोटे होची array तो এই object आ arrays विषय रे मागु पढिबा reference data type विषय रे तापर होची बुझिला जाय प्रज्ञा आज्ञा सर तापर होची abstract data type include the data type derived from the primitive data type and have more function than the primitive data type अच्छा हमें जत्ता बळे primitive data type लिखिबा एटा हमें देखि देबा किछि एग्जांपल हमें जतरा primitive data element लिखुजे suppose मैं इट डिफाइन कली int a it is a primitive data type so I store the 5 string int a then float mark पहले suppose 30.55 एटा हला मार्क सेमते हमें डबल भी यूज करि परिबा डबल मार्क in the 65.5 but now मुझे तले क्यार डाटा टाइप पास करिवे इधर क्यार डाटा टाइप पास करिवे क्यार na so at a time I store only one letter so क्यार डाटा टाइप means I have to store only one letter क्यार na now I store here क्यार na then size यदि मु किछि वर्ड स्टोर करिया को चाहू छी क्यार na5 so I store here hello तो एठी मोर कोन होची ना जदि मल्टीपल लेटर मते पास करिवार अछि ताले मते एठी साइज दबा को पडुची जदि मु एठी जदि 5 साइज देली आ स्टोर कली 4 ताले गोटे जो स्पेस रही गला ए स्पेस ता मो पय फ्री हैला नै तेनु कहला एटा ऑक्युपाइड मेमोरी हे गला किंतु एई जो प्रॉब्लम टा को रिमूव करिया पय जावा गोटे एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप प्रोवाइड करूची सेटा होची स्ट्रिंग na मु गोटे लेटर स्टोर करि परिबी नहले मु जदि मल्टीपल लेटर चाहू छी एठी मु स्टोर करि परिबी मु जेते चाहिबी सेते लेटर एठी स्टोर करि परिबी
तो एटा कुहा जीव कोन ना स्ट्रिंग डाटा टाइप is a abstract data type which is derived from the primitive data type माने char data type रा आसे जे किंतु it has a more functionality than the primitive data type बुझियला आज्ञा सर ओके तो एटा हला हमर डाटा टाइप हमें डिफाइन करले तो एई वे रे हमें डाटा टाइप डिफाइन करिबा ओके सो नेक्स्ट क्लास रे काली हमें जावा रे केमते फर्स्ट प्रोग्राम लिखिबा एटा हमें डिफाइन करिबा तो हमको तुमको जावा रा केमते प्रोग्राम लिखा हबो केमते रन हबो तो काली म तुमको देखि देबो ओके आज्ञा सर